सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि के रूप में रहती है उसे हमारा त्रिवार प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में रहती है उस देवी को हमारा त्रिवार प्रणाम। Good afternoon one and all. Here we are the students of class 6B going to perform before you on the topic of Dashera. Harsh, can you tell us something about Dashera? Yes, why not? Dashera is the festival celebrated in the Hindu month of Ashwin and lasts for 10 days. Simultaneously, in North India, it is known as Vijayadashmi, Durga Puja in Bengal, while Navratri in Gujarat, or the festival of 9 nights. In all over India, Dashera is celebrated as a symbol of victory of good over evil. This day marks the triumph of Lord Rama over the mighty Ravana, who abducted Sita to his kingdom of Lanka. Lord Rama, with help of his brother Lakshman and Hanuman, rescued Sita after a long battle in which the island of Lanka was burnt into ashes. Now, the students of class 6B would like to perform the famous dance form of Gujarat called Dandiya, and through this they'll express their happiness. This was Harsh Malu And Vaishnavi Patil from class 6B. Thank you and enjoy the dance. सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे
उसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोक करे तो हे प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे जिसकी बलि चढ़ाऊं तुझ पे, तू प्रसन्न हो जाए। दुश्मन थर थर कांपे माँ, जब तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए। Wow, what a performance of Dashera. Wasn't it hilarious, Aishwarya? Yes, it was a great performance, and according to me, it deserves the great applause of audience. Now, after a glorious performance of Dashera, we move on to the festival of lights, Diwali. Can you describe about Diwali to us? Oh, Diwali, it is a festival which brings health, wealth and joy together at every door, which glitters in the burst of the crackers and melody of sweets. It spreads light of happiness on everyone's heart and soul. It is the most important identity of Indian tradition. Yeah, you are right, Aishwarya. Diwali is worship of lights, gratitude to sparks, desire for wealth, hope of prosperity. Yes, Shivani, I think Diwali occupies different places for different people at different ages. Diwali is fun for young, mischief for adolescents, smirk devotion of women, and satisfaction of elders. That was a well said definition of Diwali. Don't you think Diwali is also joy of health, cheer of mind, beauty of universe and glamour of ornaments? Yes, Diwali is such an amazing festival that at describing it, it is difficult to take a pause. But Aishwarya, here we really need to take a pause as we have to continue the program. So let's light a lamp of love in every heart and heartily welcome the bright, scented, prosperous Diwali performance by the young and energetic performers of 90. Good afternoon, parents. I'm here to take you all to the 4-day celebration of Diwali. It starts on the 13th day of Krishna Paksha of Kartik month as Dhanateras. People perform a puja of utensils and metal objects. Entrances are made colorful with lovely traditional motifs of Rangoli designs. Yes, the next comes Lakshmi Pujan. People heartily welcome Lakshmi, the goddess of wealth, and worship her for the enhance of wealth and prosperity. They also worship Lord Kuber, the god of wealth. A notable art for children during Diwali is fort making. A large amount of firecrackers are burst and sweets are distributed among friends and families. Lakshmi Pujan is followed by Padwa. It is one of the most auspicious and pious days of Hindu calendar. Occupations and businesses are begin with a new start, hoping that it will take a boost in the following year. It is a great day for the shopping of cars, jewelry, electronics, etc. And the last event of Diwali is Bhai Dooj. On this day, a sister offers an aarti to her brother. It is a great day for all the Indian brothers and sisters. This strengthens the bond between them.
And thus, Diwali ends with Bhai Dooj. A loud sound of crackers can be heard everywhere. Diwali is the festival of lights. Oil lamps are placed everywhere. It signifies that the more we learn, the brighter our mind becomes. It puts into us a ray of hope, knowledge and joy. So let's move on to the sparkling performance by Class 9th A. ये दिन जहां में हर कहीं भर दे रोशनी,
एक बहुत बड़े त्योहार बैसाखी की तरफ। क्वेश्चन हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर काजल, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? तुम्हें नहीं पता साक्षी, यह त्योहार क्यों Please मनाया keep जाता silent है? when they are announcing. Please. Again, please. यह त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फसल कटी जाती है और किसान बहुत खुश होते हैं। पर काजल, ये त्योहार कैसे मनाया जाता है? तुम्हें यह भी नहीं पता साक्षी कि यह त्योहार कैसे मनाया जाता है? नहीं ना, कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, छोड़ो भी, कोई गल नहीं, मैं बताती हूँ। ये त्योहार बड़ी धूमधाम से खुशियां नाल मनाया जाता है। इस त्योहार ਨੂੰ नवे कपड़े पा के पंजाब के किसान अपने परिवार दे नाल पंजाबी लोक गीत गा के भंगड़ा नच कर देने। वाह, कितना मजा आता होगा ना। काश मैं भी ये सब अपनी आंखों से देख पाती। देखना है ना, तो चलो चलते हैं कक्षा 7वीं सी की तरफ, जो हमें भंगड़ा नच कर दिखाने के लिए उत्सुक बैठे हैं। मैं और काजल तो जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं ना? तो चलिए।
Show your encouragement, please. Once again, welcome to all of you after this break. Happy New Year! What a Happy New Year! Why, what happened? It's the same old story about the social problems like poverty, pollution, population, illiteracy, corruption, religious conflicts and terrorism, which never seems to end. And you're saying me Happy New Year as if nothing has happened only? What, Nidhi? You spoiled my whole mood. I was so excited to go to the New Year party tonight. Arey, I was just trying to make the young minds of India to away from these social problems. Okay. I have an idea. I'll try to fulfill your wish by showing a few acts on social problems. I have an act on spoiling the environment. हो गया रैपर्स फेंक दो नहीं उसकी क्या जरूरत है यहीं फेंक देते हैं पर ये सब कुछ गंदा हो रहा है हमें ऐसे गंदा नहीं करना चाहिए ना अरे भाई तुम फिर से शुरू मत हो जाना अभी तो लेट हुआ है हम चले जाएंगे Yes. Now next we have an act. In this act, there is one poor man who is illiterate. As he is poor, he goes to the village headman for some help. The headman gives him money, but also takes his thumb on the paper. Now let's see what happens the next day. ए ससुरे, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज से तुम्हारी जमीन मेरी है तुम्हारी रोजी रोटी के लिए तुम मेरे खेत में आके मजदूरी कर सकते हो पर मालिक अरे ये क्या हो गया? उसने तो मेरी सारी जमीन सारा खेत ले लिया। अगर मैं आज थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होता तो आज ऐसा न होता। Lastly, we have an act on corruption. हेलो सर। हेलो थैंक्स मैन। मुझे लोन चाहिए था और मैंने एप्लीकेशन भर के भी दिया था आपको पर अभी तक अप्रूवल नहीं मिला हाँ तब तक आपको अप्रूवल मिल जाएगा लेकिन आप हम भी आपका ख्याल रखेंगे सर आपका ख्याल रखने के लिए मुझे कितने देने पड़ेंगे वैसे तो मैं 4 लेता हूँ लेकिन आपके लिए 2 ले लूँगा थैंक यू सर सर आपका काम हो जाएगा Happy now? Yes, now I am happy. And I am also ready to join the New Year party tonight. But Anushka, you said me that these social problems relates with our New Year party tonight. But how? Arey, this is a unique celebration today. What? Unique? What's unique in that? It is unique because in this we not only indicate happiness of the coming New Year, but also wake the citizens up and make them aware of their duties and responsibilities. And in our performance, we assume each citizen as a seed of India. Oh, it means we are presenting this song to make aware all of them from these social problems, to wake up them and fill their life of colorness with happiness. Yes, you are right. And I personally say that on this eve of New Year party, we should find resolutions on these problems. By the way, Anushka, when is the party tonight? But say me what's the time now? Arey, leave that. First you should answer my one question. Which question? If you plant a seed and it does not grow, what you will say to it? Of course, wake up seed. Come on, let's enjoy with us. तो जरा हमको है ये कहना वक्त है क्या तुमको पता है ना सो गई रात जाके दिन है अब जाग उठा आंखें मसलता है सारा ये समा आवाजें भी
जो कहे वो जो कहे सुन लो, जो भी सही तुमको लगे चुन लो। करना है क्या तुम्हें ये तुम ही करो फैसला, ये सोच लो तुमको जाना है कहाँ। तुम ही मुसाफिर तुम ही तो कारवां। Wake up Sid, सारे पल कहे Wake up Sid, चल कहीं चले Wake up Sid, सब दिशाओं से आ रही है सदा सुन सको अगर सुनो सुनो। Wake up! आज भी देखो कल जैसा ही न हो, आज भी यूं ना तुम सोते ही रहो। इतने क्यों सुस्त हो, कुछ करो कुछ सुनो कुछ ना कुछ करो। तो पढ़ो या हंसो जिंदगी में कोई ना कोई तो रंग भरो। सारे पल कहे Wake up Sid, चल कहीं चले Wake up Sid, सब दिशाओं से आ रही है सदा सुन सको अगर सुनो 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 सुनो। Wake up Sid, सारे पल कहे Wake up Sid, चल कहीं चले Wake up Sid, सब दिशाओं से आ रही है सदा सुन सको अगर सुनो। Wake up Sid, सारे पल कहे Wake up Sid, चल कहीं चले Wake up Sid, सब दिशाओं से आ रही है सदा सुन सको अगर सुनो सुनो। Next, why do people tie bells in cows' necks? Why do people tie bells in cows' neck?